Great evening, all my dear friends. So let's start our session, question answer session, and we are going to start today's session with a question of Jitendra sir. So Jitendra ji, मैं आपको unmute कर रहा हूँ. Go ahead, ask your question. ग्रेट इवनिंग सर, ग्रेट इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली सॉरी सर, एक्चुअली बहुत दिनों से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, Doesn't matter, sir. है ना। Go ahead. एक्चुअली मुझे मेरा क्वेश्चन वही है कि अभी सपोज अपने जो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि क्या है ना, आपका सेशन मीन्स कनेक्ट करना, ऑफिशियल कमिटमेंट, फैमिली कमिटमेंट, बाद में फ्रेंड्स के जो है, उसके अलावा अपना फिजिकल जो होते हैं मीन्स स्ट्रेस वगैरह, Right. इसको मीन्स कैसे प्रायोरिटी करना है, मीन्स प्रायोरिटी कैसे करना है। Wow, this is an amazing question. First of all, Jitendra ji, मैं आपको कहूंगा number one priority always is your health. Because sir, as a human being, आप एक एक वो हो मतलब I mean to say as a human being you need to play the role. I mean to say first of all you need to be healthy as a human being. That is your first responsibility, first part. और उसके बाद आप एक हस्बैंड हो सकते हैं, उसके बाद आप एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसके बाद आप बहुत कुछ हो सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग. आप सबसे पहले एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग और उसके लिए आपको काम करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटाइज योर हेल्थ. आप क्या खाना खा रहे हो, आपका सोने का टाइम, आपका उठने का टाइम, आपका एक्सरसाइज का पैटर्न, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू प्रायोरिटाइज फर्स्ट. ये सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए. और उसके बाद जो भी है, जो भी अलग अलग टारगेट्स हैं, तो वहां पे वो टारगेट्स रिक्वायरमेंट के अनुसार ऊपर नीचे हो सकते हैं. जैसे कि समझो अभी मार्च आने वाला है. March is nearby. I know you work in a bank, and for you banking people, March is like big month. It's a big month, really big month. So now, when you are in the month of March, so that point of time, the first priority always the health, and second priority is going to be your work, your profession. Are you getting my point? यस सर। When month of December is going on, then the priority is going to be your family. Why? Because in the month of December you can utilize all your leaves. जो भी एक साल के लिए आपने अलग अलग मेडिकल लीव्स, देन ये लीव वो लीव, जो भी आपके पास लीव्स है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. यू कैन गो आउट विथ योर फैमिली, मे बी विथ योर फ्रेंड्स, or maybe some kind of spiritual activities, because you have the free time. So that time the priority is going to be your vacation, your family, your friends. So मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म में कहूंगा, नंबर वन प्रायोरिटी ऑलवेज इज योर हेल्थ, एंड देन एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सिचुएशन, प्रायोरिटी विल शिफ्ट. हैव यू गॉट द आंसर? यस सर, यस। यप. और एक मैं आपको एक चीज कहूंगा, along with the health, along with the health, you must work hard on yourself. यस यू सर। मस्ट वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ. बिकॉज जब आप खुद के ऊपर मेहनत करेंगे, मतलब अच्छी किताबें पढ़ना हो, या फिर एक्सरसाइज करना हो, या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना हो, जब आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे, तब जब आप जॉब में जाओगे या बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, वहां पे आपकी इफिशियंसी टॉप क्लास रहेगी. आपकी जो इफिशियंसी है वो टॉप क्लास रहेगी, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली खुद को अपडेट कर रहे हैं, आपके स्किल्स एक अलग लेवल पे है. और इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ, उसके साथ साइड बाय साइड आपको हर दिन आधा घंटा से एक घंटा, 30 to 60 minutes, you need to work hard on yourself. See, it can be yoga, it can be meditation, it can be reading books, it can be watching movies, the motivational movies, motivational videos, something you need to do every single day. I hope you got the answer. यस सर, यस सर। Amazing question. सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपने सिक्सर मार दिया है. अभी नहीं, एक्चुअली इसीलिए एक्चुअली थोड़ा सर मेरा बाहर भी थोड़ा टूर था, उसके राइट. बाद ऑफिशियल कमिटमेंट वगैरह बाकी मीन्स अभी फैमिली के भी कमिटमेंट थे, राइट. इसलिए मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया, क्योंकि इट एक डजेंट मैटर. ज्वाइन करने के बाद दूसरे ज्वाइन नहीं किया तो फिर थोड़ा। It doesn't matter at all. So, as I told you, as per requirement, your priority is going to shift always. We cannot be rigid. हम लोग rigid बन जाएंगे तो कुछ तो फूट जाएगा, टूट जाएगा. वैसे में करना नहीं है. We need to be flexible in our priorities, because it is not a game of time management, it is a game of priority management. It's an amazing question. अभी इंडिया की बैटिंग शुरू हो चुकी है न्यूजीलैंड के साथ सेकेंड T20 में, और आपने
एज अ क्वेश्चन आस्क कर सबसे पहले बॉल पे सिक्सर मार दिया. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ऑसम. Any other question, my dear friends? So let me explore the chat box. Chat box में मुझे कुछ questions शायद दिख रहे हैं. शायद मुझे explore करने दीजिए. Yes, yes. So there is one question by our idealistic personality, the dashing personality. चलो मैं जरा पढ़ लेता हूँ ये question. Great. We say man is a social animal, so we can't survive alone. Life without anyone's help. Yeah, absolutely. Absolutely. See, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते यार. We cannot do anything alone. आपने कभी टीम का फुल फॉर्म देखा है? TEAM. टुगेदर ईच अचीव मोर इज टीम. टीम का फुल फॉर्म है टुगेदर ईच अचीव मोर. आप अकेले सब कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके पास सभी टाइप्स के स्किल्स इक्वल लेवल पे नहीं है. Now, you being an idealistic personality, you have fantastic ability to do the research, to ask some anti-questions, ask some amazing questions. So that is a big gift you have got. लेकिन आपके पास रिस्क टेकिंग की एबिलिटी नहीं है. आपके पास मैन मैनेजमेंट की इतनी जबरदस्त एबिलिटी गॉड गिफ्टेड नहीं है. आप डेवलप कर सकते हो, बट इज नॉट गॉड गिफ्टेड. तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी का सपोर्ट लेना जरूरी है. सी यू आर नॉट अ ग्रेट डिजाइनर, देन यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ डिजाइनर. यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ एक्सपर्ट. जब आप बीमार होते हो या फिर कुछ हेल्थ में चैलेंज है, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ डॉक्टर. डू नॉट ट्राई टू सेल्फ मेडिकेट थ्रू द गूगल. सो वी हैव बीन डूइंग दैट. और हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते. हम जिंदगी में जो भी करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है. आपने कभी देखा होगा कोई एक्टर एक्ट्रेस अवार्ड रिसीव करते हैं, कोई गाने के लिए या फिर कोई कोई सॉन्ग के लिए या फिर किसी के लिए भी. दे ऑलवेज से यार ये अवार्ड ये मेरा नहीं है, आई रियली वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू ऑल माय टीम मेंबर्स. यार जो मूवी बनती है, जो स्पॉट बॉय होता है, स्पॉट बॉय वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार. वो मेकअप मैन है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बहुत सारे लोग होते हैं वो जाने अनजाने में हमें सपोर्ट करते हैं. हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. आई होप यू गॉट द आंसर, Ronak, my dear friend. And hence you should have amazing bonding with everyone. Yep, you must have amazing bonding with everyone, and hence always have the tool of appreciation with you. जितना आप लोगों को appreciate करेंगे उतनी आपकी bonding जबरदस्त बन जाएगी, and you will get the help whenever you want. I hope you got the answer, my dear friend Ronak. Otherwise you can ask another question. So let me go to my another friend Shalla Durai. Go ahead, my dear friend, ask your question. Yeah, you can. Yeah, go Yeah, ahead. it was so nice, like having a interaction with you on a weekend, and thanks for that. Yeah, And it's my pleasure. And one more thing I want to let me tell you one thing. Your success is my passion and obsession. sure, thank you so Awesome. much. Go ahead, sir. Go ahead. Yeah, and two things I want to tell. One is last week I suggested for this book Atomic Habits. I Yeah. started reading that. It is a Wow. very good suggestion from you, and I feeling very good after reading. Wow. And thanks for that. And second thing I want to ask is the thing which I feel many times, like what I call like overwhelming, like maybe if anything I'm starting, so feels like sometime to be completed immediately, or to be if maybe like any example in a book, or like, so if you like to be completed immediate, but then after some time it feels if it doesn't happen, then that continuity sometimes it gets missed, like, so maybe I feel that word is overwhelming, all this thing. So how to tackle those things, like? Yeah. Yeah, amazing. It's an amazing question. Thank you so much for asking this question. So I will answer in English only. I guess you are quite comfortable in English only compared to Hindi, right? Yeah, Hindi also chalega. Hindi, चलेगा क्या? Marathi, Okay, पण okay. चालेल. Because yeah, great. Because हिंदी में दूंगा तो बहुत ज्यादा लोगों तक आंसर पहुंचेगा. That is the only हाँ, reason. जो मैं आपको इतना ही बताऊंगा दोस्त, जब भी आपके सामने कोई टारगेट होता है, तो हाँ, वो टारगेट कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर पाओगे वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. okay. तो कभी कभी कोई एरिया में हमारे स्किल्स जबरदस्त नहीं होते, सो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. कोई एरिया में हमारे स्किल्स बहुत जबरदस्त होते हैं, तो वहां पे हम लोग बहुत कम समय में वो टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं.
Sometimes you can delegate. आपका जो मिशन है, टारगेट है, you can delegate to someone else. तो वहां से भी आप बहुत जल्दी कोई चीज को कंप्लीट कर पाएंगे. So there are so many different ways to boost your productivity. So you can utilize that. You can take help of Google or maybe YouTube productivity hacks. If you use the technology, you can be really productive. You can automate a lot of things, and this is how you can reduce the feeling of overwhelming. जो overwhelming का feeling होता है, हम लोग या फिर बहुत ज्यादा bombard हो जाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है. So I would say take a chill pill and try to analyze your strategies, tactics. जो tools, strategies आप इस्तेमाल कर रहे हो, ask yourself, is there any better strategy? Is there anyone in the world who is doing far more better than me in this specific field? You will find such lot of people and try to analyze them. Try to understand what exactly different they are doing. That's it. And you will crack the secret. And you can finish off that task really well. I hope it is helping. Yeah, Challa, right? Yes, yes. I could understand that. Yeah. Yeah. So I would Thanks. say, try to explore different ways of doing the same thing. Okay. See, now I'll give you one example. Suppose you want to read a book, okay? Yeah. And it is quite difficult for you to finish the book within that stipulated time. You have a lot of Right. activities. Maybe you are traveling and all. Now, what you can do in that scenario, you can take help of an audiobook. Okay. You're traveling, you can take help of an audiobook. And once you go for an audiobook, you can do it while traveling also. Right. And you can finish off that book really well because you're not getting enough time to read that book. Maybe I'll give you one more option. You can go on YouTube and you can search for summary of that book. Okay. So within 5 minutes, you'll get complete summary of that book. That is also one of the options. Or maybe you can talk to someone who already read that book and you can ask for the golden nuggets from that person. Mm-hmm. So these are the different ways of doing the same task. Okay. I hope you got the answer. Yeah, understood. Amazing, amazing. Keep asking question. I really love your question. I really appreciate that. Awesome. Great, my dear friends. There are amazing questions are there. Yeah. So यहाँ पे और एक सवाल आया है. I can read it in the chat box. How to detach from people? So simple. So simple. Albert Einstein ने बताया है. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or the things. I would say attach your life to your goal. Attach your life to your goal. That's it. Moment you attach your life to a goal, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लोग हैं नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Why? Because you are getting enough dopamine. वो अटैचमेंट डिटैचमेंट का फंडा क्यों होता है मेरे दोस्त? बिकॉज डोपामिन यहाँ पे रोल प्ले करता है. When you do not have enough dopamine in your system, then you need people to talk to and all. And when you depend upon someone completely for the dopamine, you are doing a big blunder. I would say whatever dopamine or happiness you're going to get from people, that has to be the bonus. वो bonus होना चाहिए. And you have to take 100% responsibility for your happiness, for your dopamine. And for that, you need to attach your life to your goal. And your goal, हमारा goal यही होना चाहिए. I want to be in a peak state always. What is your goal? Ideally, हमारा goal होना चाहिए. I want to be in a peak state always, irrespective of the situation. And what is the meaning of peak state? Peak state का मतलब है being grateful, being joyous, being curious, being meditative, being helpful, being supportive. These are the different states in which you feel really awesome. You feel really fantastic. You are in a peak state. तो हमारे जिंदगी का ultimate goal यही होना चाहिए. I want to be in a peak state irrespective of the situation. My dear friend, if you can practice this, you don't need anyone for happiness. And you will have no expectation from others. किसी से कोई expectation ही नहीं रहेगी. Tony Robbins कहता है, trade your expectation for appreciation. Trade your expectations for appreciation. And when you do that, life is blissful. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends. Ask your questions. Put your question in the chat box, or maybe, you can just raise your hand. I'll unmute you.
कुछ सवाल रहेगा तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए. ओ a big question in the chat box right now. It's a direct message, so I'm not going to take a name. By the way, अगर आप मुझे प्राइवेट सवाल पूछेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट मैसेज करेंगे, I am not going to take your name and I'll just answer because I know you have asked this question privately. I will respect your privacy. So ask me anything you want. I'll not reveal your name. Yep. Go ahead. So I can see right now there is one question, a big question. So let me read. Let me just take a few minutes, not minute, I would say few seconds for that. Okay, चलो मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं. सवाल मुझे समझ में आ चुका है. Aggression, anger is a negative emotion. Yeah, true. Question: how can we achieve something by getting driven by such negative emotions, or is there any limitation to getting driven by a negative emotion? Wow, this is a fantastic question. Example भी यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने. Example: we see few people in our colleagues or classmates are doing great or achieving big things or even getting a high post in the office by getting driven by craze of defeating someone or achieving something to prove someone wrong. Wow, now this is an amazing question. Let me tell you. First of all, anger can be converted into power. My dear friend, whenever you get angry, actually गुस्सा आना कोई चीज के लिए, it is a big quality. Actually, it can be a big quality if you can use that emotion constructively. Aggression or maybe anger, it can be used constructively. You need to convert your pain into power. You need to convert your anger into power. I hope you're getting the point. So I'll give you my example. अगर मैं किसी को मेरा प्रोडक्ट ऑफर करता हूं, मैं पिच करता हूं उनको मेरा प्रोडक्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, अगर वो प्रोडक्ट वो बंदा परचेज नहीं करता, सो ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आता है. लेट मी टेल यू, बिकॉज मुझे पता है यार, वो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं दे रहा है, इतनी जबरदस्त सर्विस कोई नहीं दे रहा है, इसका भला होने वाला है, तो भी ये इंसान नाटक कर रहा है, ये लटक जाएगा. और मेरे को बहुत गुस्सा आता है वो मोमेंट पे. गुस्सा वो इंसान के ऊपर नहीं आता, गुस्सा समवेयर डाउन द लाइन मतलब मेरे पे आता है कि यार कहां पे तो मैं मिसिंग हूं, मेरे कम्युनिकेशन में, मेरे पिचिंग में कुछ तो है मिसिंग, या फिर वो इंसान शायद मुझे ब्रांड नहीं समझ रहा, मेरे पर विश्वास नहीं रख रहा, कुछ तो मिसिंग है. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गेट एंग्री, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री ऑन दैट पर्सन, you know, customer is always a king, customer is like a god, so you cannot be angry on that customer or a client. You have to understand that person. But I use that emotion to do something magical in my life. मैं ये एक कोट इस्तेमाल करता हूं, खुद को बताता हूं, समीर बी सो ऑसम दैट दे कैन इग्नोर यू. समीर इतना ऑसम बन जाना यार कि वो लोग तुझे इग्नोर नहीं कर पाए. जिसको जिसको तू पीच करेगा ना, वो पागल की तरह तेरे पीछे दौड़ेगा तो तेरा प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए. क्यों? बिकॉज वो इतना ऑसम बन चुका है. So be so awesome, Samir. So that drives me. When someone say no to me, that drives me like crazy to do something magical and phenomenal. Whenever I lose in any competition, अभी बीच में 2 competition हुए थे सक्सेस ज्ञान के, you know, and in that competition I lost it. In first competition I was in top 250. Around first phase में सुपर स्पीकर नंबर 1 में अराउंड 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं टॉप 250 में था. I was in top 250 और उसके बाद में फेल हो गया. I would not say fail. Actually, I would say I learned a lot because there is no such thing in life as a failure. Either we win or we learn. So वो एक इंसिडेंट हो गया. So second time फिर से एक बार वो सुपर स्पीकर कंपटीशन हुआ. Again that time around 1 to 2 lakh people registered और उसमें से मैं टॉप 1000 में था और टॉप 1000 के बाद में एलिमिनेट हो गया. तो अभी मुझे बहुत गुस्सा आया बिकॉज आई न्यू मैन, मतलब मैं जो स्पीच दे सकता हूं, मेरे में जो एबिलिटी है बहुत सारे लोगों में नहीं है. आई नो दैट. इट्स नॉट लाइक आई एम बोस्टिंग माई सेल्फ, बट आई नो व्हाट आई कैन डू इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी because I have done it. I have delivered 500 plus seminars, webinars, unbelievable success stories. I know what I can deliver, but those examiners not keeping faith in me, those examiners somewhere down the line is saying, you know, rest of the people, rest of the competition is far more better than you, Samir. They are far more better than you. They are telling me on my face by eliminating me. Now I'm using this emotion, that this aggression or anger,
as a great drive. You know what? I'm going to make sure I'm putting my heart and soul, and I'm going to make sure. See, result is not in my control at the end of the day. Result is not in my control, but efforts are always in my control. So I'm going to do something magical in my life, something phenomenal, so that I will beat all those people. शायद वो मेरे से आगे गए, वो शायद सुपर स्पीकर बन चुके हैं, they are in top 10 or top 5, I don't care. I will do something magical in my life that I will go far more ahead than them. So I'm challenging myself. I'm not challenging them. I'm just comparing myself with myself. मतलब मेरा कल का वर्जन कैसा था और आज का मेरा वर्जन कैसा है. How can I improve? How can I go far more ahead? How can I improve myself? So this is how you can use the anger. Because I'm quite angry. मतलब आपको शायद लगता नहीं होगा, but मैं बहुत गुस्सा करता हूँ. मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ. I don't like when people, discard me. I hate that. I hate that. I'm like a Virat Kohli. You can call me Virat Kohli because Virat Kohli का भी आपने देखा होगा, जो बहुत पागल जैसा वो aggressive रहता है, obsessed रहता है. I correlate with him. I relate with him a lot. जिस तरह से वो चिल्लाता है और जो भी करता है ना, I'm exactly like that. Exactly like that. You can call me egoistic person, maybe, because I always want to win. I'm a bad loser. I just hate losing. I just want to win every single time. Yeah, it's not possible. I know that, but I try to put my heart and soul. This is what the answer from my side. I hope you got the answer. Anger is a fantastic emotion, my dear friend. I know it is negative, but if you can use it constructively, it can be converted into power. I hope you got the answer. And I would say, always compare with yourself. आपका कल का परफॉर्मेंस कैसा था? How was your yesterday's performance and how is your today's performance? Always compare that and move ahead in your life. एक बहुत जबरदस्त कोट है, when you try to compare your life with someone else and you put the efforts, you can go up to certain level. लेकिन आप खुद के ही रिकॉर्ड्स तोड़ते रहोगे तो आप कहां पे पहुंचोगे आप सोच भी नहीं सकते. I hope you're getting the answer. You can reach some phenomenal level because you're comparing with yourself. Because बहुत बार ऐसे हो सकता है ना कि आप जो लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो आपकी लाइफ, उससे थोड़े से आप आगे चलने के बाद क्या हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे. गोल अचीव हो गया, रिलैक्स, अभी कुछ नहीं करना है, अभी टाइम पास करना है, धमाल करना है, मजा करना है, मस्ती करना है, और आप मेहनत करना छोड़ दोगे. व्हाई? बिकॉज यू आर फार मोर अहेड देन देम. और आप मेहनत करना बंद कर दोगे. और इसीलिए खुद के साथ कंपैरिजन करो, बिकॉज देयर इज नो एंड टू द इंप्रूवमेंट. There is no end to the improvement. Sky is the limit because you can always improve yourself. There is always scope for improvement. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends. Go ahead, ask your question. Just raise your hand or put your question in the chat box. Raise your hand or put your question in the chat box. Go ahead, my dear friends. This question answer session is your session. आप जितने सवाल पूछेंगे तब तक ये क्वेश्चन आंसर सेशन जारी रहेगा. आपके सवाल बंद हो गए तो ये सेशन बंद हो जाएगा. और मैं आपको बताना चाहता हूं यार, सवाल पूछना ये पुण्य कमाने का काम है. आप बोलेंगे यार समीर ये क्या बोल रहा है, ये कहां से आइटम निकाला तुमने. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन और जो मेरे से जवाब मिलता है उससे बहुत लोगों का फायदा होता है. तो जो भी सवाल पूछने वाला इंसान होता है ना, उसको लोग जाने अनजाने में बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत दुआएं देते हैं. और आपको पता है यही सेशन में यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूं, और यूट्यूब के ऊपर तो दुनिया पूरी देखती रहती है और आपको दुआएं मिलते रहेंगी. इट्स लाइक अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. पैसिव सोर्स पता है ना आपको? पैसिव सोर्स ऑफ मतलब हम कुछ करते नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक अकाउंट में पैसा जमा होता है. जैसे कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, आपको पता रहेगा लेकिन किसी को पता नहीं रहेगा तो उसके लिए बताता हूं. समझो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है और आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, तो उसके बाद एवरी मंथ यू आर गोइंग टू गेट दैट मनी. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट, बट एवरी मंथ यू आर गेटिंग द मनी. दिस इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम. तो उसी तरह से पैसिव ब्लेसिंग्स भी आप अचीव कर सकते हो. जब आप कोई सवाल पूछते हो और उसका जवाब सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हो जाएगा, तो जिसने भी सवाल पूछा है उसको दुआएं मिलती रहेगी, मुझे भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी. और देयर इज अ पैसिव सोर्स ऑफ पुण्य, इज अ पैसिव सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स. सोते भी रहेंगे ना हम लोग रात के समय, कोई यूएस में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन देख लेगा रिकॉर्डिंग और हमें दुआएं भेजेगा और बोलेगा गॉड ब्लेस यू स्पीकर, गॉड ब्लेस यू समीर, और जिसने सवाल पूछा है उसका भी भला करे, उसको भी भगवान बहुत कुछ दे. अब हम लोग सो रहे हैं और दुआएं अकाउंट में आ रही है. आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू बीट योर डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी को
अगर आपको बीट करना है, blessing is the only solution. Trust me. You may wear some kind of stone or something, उससे भी definitely आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं, बट दुआओं का खेल बहुत निराला होता है. So always be hungry to collect the blessings. Wow. So यहाँ पे एक बंदे ने मोटिवेट होके यहाँ पे सवाल पूछ लिया है. Many times we tend to hide our good things because there are jealous and negative people around, and we think I'm sorry, we think, why should we tell them, as is it of the no use. आप खुद के एक्सप्रेशन को लिमिट क्यों कर रहे हैं? जलने वाले तो जलेंगे ना यार. See, लोग किस तरह से बिहेव करने वाले हैं, it is not in our control. Not in our control. As long as we know whatever we are doing, it's really great. We must do that. We must do that. You know, we must become the shameless promoter of our products and services. बेशरम बनना होगा यार खुद का प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट करने के लिए. और हम भी एक प्रोडक्ट ही है यार, तो हमें खुद को प्रमोट करना चाहिए. We must promote ourselves. Nothing wrong in that. सामने वाला बंदा हमारे ऊपर जले मरे, वो तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते यार. हमने थोड़ी ना बोला है तू जलना शुरू कर. वो इंस्पिरेशन भी ले सकता है हमसे. That person can take inspiration also. So it is up to that person. It is not your business. So you just do your work. You just express yourself. हाँ, definitely. आपको सभी जगह पे एक्सप्रेस नहीं करना है. You need to express with the right people. लेकिन अगर समझो वहां पे एक्सप्रेस करना जरूरी है, तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए. Whether people are jealous or not jealous, that is not your concern. I hope you got the answer. हाँ, मतलब देखो, जो जगह पे बताने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो वहां पे आप शांत रहेंगे तो चल जाएगा. वहां पे आपको शांत रहना जरूरी है. वहां पे आपको खुद को मतलब खुद के बारे में बताना जरूरी नहीं है. मतलब जो जगह पे आपको पता है कि यहाँ पे बात करके कुछ फायदा नहीं है, ये लोग कुछ सुनने वाले हैं नहीं, तो शायद आप अवॉइड कर सकते हैं. बिकॉज you cannot help someone forcefully, but sometimes you can go think like this, यार मैं मेरा रोल प्ले करती हूँ, I will just share what I have. Now let them decide whether they want my help or not. Sometimes that also you can do. So I would say, this situational thing, always take help of your gut. Try to use your sixth sense. Try to listen to your inner voice and do that. Sometimes keeping a mum is a fantastic thing. Sometimes sharing yourself is an unbelievable thing. So you take the call as per your gut, not based on your fear or judgment, as per your gut. That's it. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends, ask your questions. These are some lovely questions. Go ahead, my dear friends, ask your questions. Raise your hand or put your question in the chat box. सिंपल है. आप आज जहां पे हो और आपका सपना जहां पे, गोल, उसका जो डिस्टेंस है, उसमें जो जो आज ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, go ahead and ask that. Again, I'm telling you, I'm not saying I'm the master blaster, I know everything, but whatever is regarding mindset, I can definitely help. मे भी ऐसे भी हो सकता है यार, आप कुछ सवाल पूछेंगे, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा किसी मेरे नेटवर्क में, वो इंसान आपको हेल्प कर जाएगा. यू नेवर नो. सो ऑलवेज शेयर योर चैलेंज. गो अहेड माय डियर फ्रेंड हर्षिल भाई, पूछो आपका सवाल. Great evening, Samir bhai, and everybody. Go ahead. Yeah. See, there is a plethora of everything on the social media, be it news channel, be it cricket or any other sport of the country or of the world at large, be it in various streams like medicines or engineering. क्योंकि हमने recently खान सर को भी देखा है. And if you switch on the spiritual front, then there are various monks who are also, there is a plethora of knowledge which is given on the social media. True. And what I have observed in my teens and in the last 2 decades to say that the Bollywood movies that has been showed to the Indian masses and the world at large has affected the minds of people to a great extent. Some 100%. Bollywood movies are exceptional, but I don't want to take the name of those movies, but those dialogues, those songs, those jingles, whatever they are there, those needs to be corrected. Yeah. Right?
डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, और दर्द से जीत आता है. Right? We very well know that. Yeah. Those commercials and all those things. Yeah. So, as an educated mass which is coming out in India, we recently know the census of the country, 1.42 billion. So what is your question basically? What is your question ultimately? My question is, we as the people in the 20s and 30s, the middle age, the middle age group, we should give the right knowledge. We should have the right knowledge first, and then penetrate this right knowledge in the next generation. So, जो dialogues गलत है उसको सही dialogue बताओ आप masses को. So, Okay. see, we have various projects we can take, like in NGOs do that, but something like cow has been slaughtered. It is considered as murder in our dharma. Yeah. Right. So those study of cows, then maybe protection of nature. What is your ultimate question? Come to the question. My question is not very succinct right now, but on a blur note, I can say that what exactly you want to ask me? Matlab, I agree, whatever you said is correct, nothing wrong in that, but what exactly you want to ask? In a rough way, your question may not be absolutely clear, but whatever, maybe 10%, 5%, 2%, you can form a question and ask. Okay, the question stands as follows. Yeah. If you want, take your time, maybe 1 or 2 minutes. Let me take another question till then. I really appreciate your viewpoint. I'm giving you 2 to 3 minutes, maybe. You can form your question, and maybe you can put it in the chat box, or maybe again you can raise your hand and you can ask me. Sure, that is great. So Rishabh ji, go ahead, Rishabh ji, ask your question. Yeah, good evening everyone, and Sameer ji, how are you? I'm top of the world, man. Go ahead. Hello, great. My question was, could you share some tips about time management? Actually, Wow. I'm a working professional and I have many hobbies which I want to pursue, but I'm not able to find any time to go for these. I at least need 2 to 3 hours every day if I want to pursue all my hobbies at that time. Yeah. See, first of all, ये सवाल का जवाब एक्चुअली जो अभी आपने पूछा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एक किसी ने पूछा था, उसमें मैंने जवाब दिया है, तो भी मैं आपको समराइज करता हूँ. देखिए, टाइम जो है वो आप क्रिएट कर पाएंगे जब आपकी प्रायोरिटीज सही सेट होती हैं. You need to set your priorities, and once you have the priorities set, then you can do some amazing work. And I would say, in order to create the time, you need to delegate some activities to someone. So ask yourself, which all activities you can delegate to someone else. और आपके लिए वो टाइम आप क्रिएट कर पाओगे. या फिर आप जो तरह से काम कर रहे हो, कैन यू ऑटोमेट समथिंग? Is there any option or opportunity to automate something? There are so many amazing tools. Let me tell you, बहुत सारे tools हमें पता नहीं होते. There are so many amazing apps, tools, strategies जिससे हम लोग चीजों को automate कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं. So you can always explore that. देखिए, अभी एक simple example लेता हूँ. It's very basic example, I know, but still I'll give. There is something called as broadcast list. There is something called as broadcast list on the WhatsApp. अभी broadcast list कितना जबरदस्त फंडा है यार. ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम लोग एक फॉर्म कर देते हैं, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट फॉर्म करने के बाद किसी को भी लिस्ट में पता नहीं चलता कि वो लिस्ट में कौन है. और जो भी मैसेज आपको मिलता है, यू गेट इंडिविजुअल मैसेज. यू डू नॉट गेट इन अ ग्रुप के मैसेज कभी कभी खो जाते हैं बहुत सारे कमेंट्स में एंड ऑल. लेकिन जब आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता है, यू गेट दैट इंडिविजुअल मैसेज. So there is an importance to that, and you don't understand whether it's a broadcast message or direct message, but you get the message subconsciously कि यार मुझे ये direct message आया हुआ है, and you appreciate that communication. अभी अगर किसी को ये पता ही नहीं है, जैसे imagine कि किसी को पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो 1 to 1 200 लोगों को मैसेज भेजते रहेगा, राइट? या फिर ग्रुप फॉर्म करेगा और ग्रुप में बवाल मच जाएगा. सो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन हमारी जिंदगी में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेट हो सकते हैं. प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे हैक्स है, टूल्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. I hope you're getting the answer. Right, sir. Thank you so much. This is the way. And you know what? Once you have the priority, once you hungry to do something, you create a time for that. Anyhow, I'll give my example.
मैंने मेरे जिंदगी में कभी एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं की. आई नेवर डिड इट, नेवर एवर. लेकिन लॉकडाउन में बहुत समय था, तो लॉकडाउन में मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रह्म विद्या करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसको फॉलो करना मैंने शुरू किया. और वो करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है. आई नीड मिनिमम 60 मिनट्स फॉर दैट. तो लॉकडाउन में तो वो पॉसिबल हो गया, बिकॉज वी वर एट होम, इनफ टाइम वॉज देयर. लेकिन उसके बाद में मुझे आदत हो गई, और आदत होने के बाद आज भी, इवन आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years, आई हैव बीन फॉलोइंग दैट रिचुअल. एवरी सिंगल डे आई इन्वेस्ट 1 hour. फिर मैं किधर भी रहूं, मैं हैदराबाद में रहूं, या फिर मैं लखनऊ में आऊं, या फिर मैं और इंदौर में जाऊं, मैं किधर भी जाऊं, आई ऑलवेज क्रिएट दैट 1 hour. आई वॉन्ट इट बिकॉज दिस इज अ प्रायोरिटी राइट नाउ. सो आप भी वैसे कर सकते हो, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, बट यू जस्ट नीड टू चेक ऑन द डिलीगेशन. आप कुछ डिलीगेट कर सकते हो क्या, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसको आप कम समय में कैसे कर सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन चेंज द गेम. ऑसम. Go ahead, my dear friends, ask your questions. Go ahead, my dear friends, ask your questions. One more question I'm going to take. We are about to, close today's session. It is about to be 10 p.m. So one more last question I'm going to take. Any question, my dear friend? Harshil bhai, have you formed the question? Just raise your hand if in case you form the question, or put it in the chat box in case you want to put it in the chat box directly. I'm giving you last 1 minute for that. Last 1 minute in case you form the question. कभी कभी ऐसे हो जाता है यार, मतलब हमारे दिमाग में इतनी चीजें चलती रहती है, और कभी कभी हम लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कोई टॉपिक को लेके. समटाइम्स वी फॉरगेट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. होता है ऐसे. इट हैपेंस विद ऑल. सो नथिंग रॉन्ग हर्षिल भाई, डोंट फील लाइक यार मैंने ये क्या किया. अमेजिंग. सो देयर इज क्वेश्चन, व्हाट इज योर नीश. सो यहाँ पे 2 सवाल आए हुए हैं. आई विल ट्राई टू टेक दैट. व्हाट इज योर नीश in my case, and steps to be taken. No, मुझे सवाल समझ में नहीं आया हर्षिल भाई. So do you want to ask me like what is my God gifted potential? Is this the question like this? कुछ ऐसा सवाल है आपका? Let me unmute you. Go ahead हर्षिल भाई. Seeing the scope of work there in the country, the question is as follows. Everyone is having that unique potential. So what is my niche in terms of delivering the output? And if I have to reach to that niche, so what are the steps to be taken? Amazing. And, yeah. Amazing. I got your question. Because same question आपने already chat box में पूछा हुआ है. So मैंने ये इसका आंसर मैंने आपको already दिया हुआ है. I already gave you answer for this, I guess few months ago. I checked your fingerprint and I told you what kind of personality pattern you have. You are idealistic personality, a detail seeker, a research oriented person, a perfection oriented person. For you, going in the depth, doing research, it's a phenomenal work. And apart from that, I told you, you are 29th born. You belong to the category of number 2, being 29th born. And I told you, you are a gifted speaker, trainer, coach. Okay. You are a gifted speaker, trainer, coach, मेरे दोस्त. Tony Robbins, 29th born. क्या बोलूं और? Rajiv Talreja, one of the leading business coach of India, 29th born. Sales का बाप, महागुरु. Santosh Nair, 29th born. Dr. Joseph Murphy, the person who wrote the book Power of Your Subconscious Mind, 20th born. Even today is 29th January. Sorry? Even today, the date is 29. Exactly. Today is your lucky day, my dear friend. I am telling you, you are born to teach and share your knowledge. So for how to migrate from the current profession to this field? No. Do not migrate immediately. अरे भाई weekend है ना आपके पास. आपके पास सैटरडे है, संडे है. कोई स्कूल में जाओ, कोई कॉलेज में जाओ, कोई अनाथ आश्रम में जाओ. ट्यूशन क्लासेस यार भाई, आप तो मुंबई के हाट में रहते हो, घाटकोपर में. कितने ट्यूशन क्लासेस है? So many. And you are not an you're not an ordinary person. जैसे कि उन्हें 10th फेल है, 12th फेल है. भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ऊपर से आपने MBA भी किया है. यू हैव द कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. आपको रेड कारपेट मिलेगा मेरे दोस्त. आप कोई ट्यूशन क्लास में जाके बोलोगे आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस टू इंस्पायर द यूथ, आई जस्ट वांट 15 मिनट्स, और ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरे रिजल्ट्स है. अरे भाई रेड कारपेट डालेंगे यार, और बाद में पूछेंगे हर्षिल भाई कितना पैसा लोगे.
पैसा नहीं लोगे तो जबरदस्ती आपके पॉकेट में घुसेड़ देंगे कुछ तो लिफाफा वगैरह, और लिफाफे में कुछ तो पैसा होगा, या फिर आपको पूछेंगे सर आपका गूगल पे का नंबर यही है क्या? हाँ ठीक है, और आपको तो पैसा मिल जाएगा और लोगों की दुआएं भी मिल जाएगी। लेकिन आप घर पे बैठे रहोगे और परफेक्शन के पीछे भागते रहोगे, कुछ नहीं होगा। Go ahead and share your knowledge. You already have phenomenal knowledge of subconscious mind and you are a gifted public speaker. I know. You have the great command on the language. Saturday, Sunday में करो ना। मैं किधर बोल रहा हूँ आपको कि 10 घंटे का सेशन लो। Samir bhai, if you give me 2 to 3 minutes, I have just recorded one poem. Wait. No. I really don't have time as of now. Maybe in the next question answer session. Maybe next. So maybe from 10 after 10:30 today. Yeah. See, अभी ये सेशन खत्म होने के बाद हमारा 10 से 11 पब्लिक स्पीकिंग का सेशन है। हाँ तो उसमें करते हैं। Yeah. You can do that. Okay. I have that poem ready. Yeah. Definitely. So बाकी के लोगों को मैं कहना चाहूंगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग का एक मैराथन ट्रेनिंग होता है। इट इज अराउंड 36 आवर्स, 30 to 36 आवर का सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग का मैराथन ट्रेनिंग होता है। तो वो उसका एंडिंग का क्लोजिंग का पार्ट आज रात को 10 बजे है, 10 से 11। सो इन केस कोई कंफ्यूज हो रहा है तो वो लिंक आपको शायद नहीं मिलेगी बिकॉज आपने वो कोर्स के लिए इनरोल नहीं किया है। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स, ये कोर्स क्या है, कैसे होता है, कौन सा टाइमिंग एंड ऑल, जस्ट मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप एंड आई विल गाइड यू पर्सनली व्हाट एग्जैक्टली दिस कोर्स इज, ये कब होता है, क्या होता है, फीस एंड ऑल एवरीथिंग विल गो इन डेप्थ ऑफ दैट। ऑसम। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा। इन हिंदी कल इज यूज्ड फॉर टुमारो एंड सेम वर्ड इज यूज्ड फॉर यस्टरडे। Is there any coincidence or it is a way to the great minds of the ancient India wants to tell us the future and past is the same? Wow, amazing man, amazing. This is fantastic question. Actually future and past is not equal. See, future is equal to past when you live in the past. Tony Robbins कहता है future is not, future and present, sorry, future and past cannot be equal unless you live there. अगर आप पास्ट में ही रहोगे, बार बार वही सोचोगे, तो फ्यूचर में वही घटित होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल, बट योर कोरिलेशन इज क्वाइट अमेजिंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट। फ्यूचर एंड द पास्ट कैन नॉट बी इक्वल अनलेस यू लिव इन द पास्ट। यप। So there is one more question, final question. When you will be starting the subconscious mind book in Marathi? Wow, दिल पे ठेस पहुंच गई। So my dear friends, power of the subconscious mind book, I covered होल बुक इन हिंदी लैंग्वेज। 2022 में हर एक पेज को मैंने पढ़ा और एक्सप्लेन किया। फेसबुक लाइव में गया और मैंने एक्सप्लेन किया है। यू कैन एक्सप्लोर दोस वीडियोस, 200+ एपिसोड्स ऑन पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। बहुत डेप्थ में जाके मतलब हर एक पेज को मैंने 10 से 20-25 मिनट में डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया है इन हिंदी लैंग्वेज। सो ये साल 2023 में आई एम मराठी पर्सन, मराठी स्पीकिंग पर्सन, तो लोग सोच रहे होंगे क्या यार मराठी में कुछ करता नहीं है। तो ये साल मराठी में वो सेशन होने वाले हैं। Now this time I'm going to go YouTube live. This year I'm going to go YouTube live. So give me some time, my dear friend. Give me some time. I'm definitely going to start that. It's an amazing question and I'm definitely going to start. Just give me some time. मतलब मुझे कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है। I just need to get free from some projects. Some projects are going on. So उससे थोड़ा सा मैं कमिटमेंट वगैरह थोड़ा सा मैनेज कर लूं, then I can go bang. Awesome. So thank you so much, my dear friends, for asking fantastic top of the world questions. And that's it from my side. See you very, very soon in the next question answer session. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.